ठीक है। अच्छा, पहले हम वो सम देख लेते हैं जो हमने किया था और उसका बेस भी देख लेते हैं। तो आई हैव सम स्पीड टुडे, ठीक है, क्योंकि सिंस यू आर डूइंग अलोन, तो श्योर यू फ्रॉम होम आल्सो, घर से किया है थोड़ा होमवर्क मैंने दिया था थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए। यस मैम, यस। यू स्टडीड फाइनल काउंट बिफोर, मेरे से ही ना शायद। यस मैम, वी हैव टेकन अ क्लास। अच्छा, तब समझ में आया था। जी मैम। तो अभी याद है पुरानी पुरानी यादें, हाँ। ठीक है, तो इसमें स्क्रीन विजिबिलिटी ना। यस यस ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था कौशल ट्रेडर्स वाला। यस मैम, दिस वन ओनली। ठीक है। अच्छा, कौशल ट्रेडर्स में हमने बताया कि ये सारे हमारे जो है आइटम्स हैं जिसके ऊपर हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है अपना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स व्हिच इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, मैंने अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप ना एक तो तीनों का फॉर्मेट बना के दिखा देना, उस पे लाइन आइटम्स डाल के दे देना कि भाई इसमें आपके इसमें क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से लाइन आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से लाइन आइटम्स आते हैं, और बैलेंस शीट में। फिर इन तीनों का पर्पस कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलता है, और आपको बैलेंस शीट से। ट्रेडिंग से क्या मिलता है आपको फरिया? मैम, ग्रॉस नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। ग्रॉस, नो, ग्रॉस नेट प्रॉफिट नहीं, इधर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस ग्रॉस नेट और ग्रॉस लॉस। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है। और बैलेंस शीट से बैलेंस शीट we tally the that. assets and the liabilities, and we Yes, also take the impact of net profit or net loss to the capital account. yes ma'am, we transfer that. We transfer that. Very good. And we are able to see the actual financial picture of the business. Now, what is the other difference between trading profit and loss and balance sheet? एक तो हमने फॉर्मेट दे दिया, एक लाइन आइटम्स दे दिए, एक हमने बता दिया कि वहां से क्या क्या मिलता है। और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का भी मेजर ये डिफरेंस है कि जितना भी हमारा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आते हैं, ऑफिस से पहले आते हैं, जो फैक्ट्री में हुए, लाइटिंग फैक्ट्री में हुआ, आपका फ्यूल एक्सपेंस फैक्ट्री में हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो सब मेरा Yes ma'am, the direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड, दैट विल कम अंडर trading account, and Yes, all the indirect expenses and indirect income will come under profit profit and loss, the debit and side. balance sheet will take the net impact of both trading and profit and loss। ठीक है, Yes, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसमें? और क्या लिख सकते हैं? हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। If anything strikes your mind, आप ये भी लिख सकते हो कि सबसे पहले डिफरेंस है, सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा, अगर उसकी सीरीज देखें, देन वी विल create profit and loss account, and then we will create balance sheet. The format and the series of these accounts will be like this. ठीक है। आपको ना इस तरह से 5-7 डिफरेंस अगर जैसे कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट इट नाउ। ठीक है। yes, yes ma'am. चलो, अब मुझे बताओ इसमें से आपको ये जो आइटम्स है, लाइन आइटम्स, एंड देन हमारे पास ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको समझ में आई थी? Yes ma'am. जी। फिर भी मैं एक बार एडजस्टमेंट बता देती हूँ। दोस्त हु हैव नॉट joined the class, probably they can see the recorded version. See, this is our question for trading and profit and loss account, which says that this is the trial balance जो आपका प्रॉफिट एमएस सॉरी कौशल ट्रेडर्स ने अपना ट्रायल बैलेंस दिया, जिसमें उसने डेबिट बैलेंसेस दे दिए, क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए, एंड दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर द trading and profit and loss account and balance sheet for the year 31st March 2012. ठीक है। And at the end of the year they could realize that there are few things which they have not done it. जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नीचे, एडजस्टमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि भाई हम आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते करते कुछ चीजें भूल गए हैं, उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप एडजस्ट करें, जैसे स्टॉक ऑन 31st March 2012 वाज वैल्यूड एट 38,000,
मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है, तो हमारा रूल ये बोलता है कि जो वैल्यू कम है ना वो उठा लेते हैं, है ना, स्टॉक की। बिकॉज आप एक बात बताओ विच इज वेरी वेरी लॉजिकल, अगर कोई चीज आपने स्टॉक, स्पेशली अगर आप जिससे आप माल बना रहे हैं, वो आपने 50,000 में खरीदा था, ठीक है, और अब उसकी वैल्यू 20,000 है, तो आप एक्चुअल में देखा जाए तो आपके स्टॉक की वैल्यू 20,000 ही है, क्योंकि जब आप उसको फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल था और उसको आपने फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, आपको पर प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल पहले 50,000 के हिसाब से आप 100 की मानते थे, पर मार्केट में रॉ मटेरियल अब सस्ता हो गया है, तो दूसरे मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं वो 100 की जगह 80 या 70 या 50 जितने का भी वैसे बेचेंगे, है ना, क्योंकि सस्ते में उन्होंने रॉ मटेरियल उठा लिया, उसको कन्वर्ट किया और उन्होंने मार्केट में बेच दिया, तो मेरी तो मार्केट खराब हो जाएगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो जो आपका लेसर वैल्यू वाला होता है ना, मतलब लेसर मार्केट वैल्यू है, हम उसको उठा लेंगे, जो आपका दोनों में से कंपैरिजन में से कम प्राइस होगा मेरे मेरे अकाउंट्स में, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 Yes, ma'am. साइड पे, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी, सॉरी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में भी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा दैट विल आल्सो कम अंडर एसेट्स एट 20,000, ठीक है। कैन यू सी Yes, ma'am. इन द बैलेंस शीट, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, उसके बाद wages amounting to rupees 2,000 and salaries amounting to rupees 1,500 are outstanding। इसका मतलब ये है कि एट द एंड उनको ये रियलाइज हुआ कि जो मेरे वेजेस जाते थे उसमें से 2,000 का मेरा पेमेंट कम हुआ है, और मेरे सैलरीज में भी 1,500 का पेमेंट कम हुआ है। दैट मीन्स दीज आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव नॉट मेट इन ड्यूरिंग द ईयर एंड यू विल बी पेइंग इट फॉर दिस ईयर इटसेल्फ। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं हम उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं। इट इज एंड इफ यू हैव पेड एनीथिंग एक्स्ट्रा व्हिच इज फॉर नेक्स्ट ईयर, वो हम उसको हटा देंगे अपने खर्चों में से, और अगर वो आपका एसेट्स की तरह खड़ा हो जाएगा, मतलब प्रीपेड आपका खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई चीज आपने जो पे नहीं करी वो आपके लिए उस साल का खर्चा है, सो दैट विल Liability. बैलेंस शीट, और वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। उसको आपने मीट नहीं करा मगर आपको मीट करना होगा, सो मे बी यू मे ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में पे करो, मिड में पे करो, जब भी है, लेकिन वो खर्चा एक्चुअली उस साल के लिए है जिस साल के लिए आपने वो आपका एक्सपेंस था, ठीक है। तो क्योंकि हम उस साल में मेरी क्या फाइनेंशियल पिक्चर है ये समझते हैं फाइनल अकाउंट से, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस व्हिच यू हैव नॉट मेंट टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 2,000 और 1,500 का मेरा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये जो है मेरा कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में या लायबिलिटी में? Assets will have outstanding wages and outstanding salaries, and the prepaid will be in the asset. Sorry. Outstanding will be in the liability, and assets may prepaid insurance. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सो जो वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह रह गए हैं उसको हम लायबिलिटी में ऐड करेंगे, और जो मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है वो मेरा एसेट्स कहलाएगा, ठीक है। जी मैम। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन है मेरा प्लांट एंड मशीनरी पे 5% और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10%। ये क्या होगा? First, it will be on 40,000, like plant and machinery. 40,000 of 5%, and furniture 5,000 is given. So 5,000 pay 10%. So that yes, and that will go to the assets minus 2,000 and minus 500, and depreciation will also be added in the profit and loss account. And is it an expense or a expense or an income? It is an expense. So why it is coming under profit and loss account? Because indirect expenses. करेक्ट है, ये एक्सपेंस है, और दूसरी बात ये कि रेकरिंग एक्सपेंस है आपके प्रॉफिट लॉस में, आपके एक्सपेंसेस वाली साइड में, डेबिट वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर फरिया आपने ये क्वेश्चन करा है अपने हाथ से, आपका मैच कर गया बैलेंस?
बैलेंस मैच करके मैंने 2-3 बार किया था. फर्स्ट टाइम इट डिड नॉट मैच. नेक्स्ट अगेन आई ट्राइड, देन इट आई अंडरस्टूड. You understood. Very nice. And you have done it, correct? Yes, ma'am, I've done it. तो ये आपको ड्राइंग्स वाला पॉइंट समझ में आया है इसमें? Drawings that has to be subtracted by the capital, that one. प्रॉफिट, करेक्ट. हाँ, मतलब नेट कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ये. वंस यू विल ऐड और लेस प्रॉफिट लाइबिलिटी वाली साइड पे आपके कैपिटल में, Yes, उसके ma'am. बाद आपको ड्राइंग्स को माइनस करना होगा. ठीक है, ठीक है. तो ये आपका 141,300 मैच कर गया बैलेंस. जी मैम, जी. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जॉब. ओके, देन अच्छा, कितनी कितनी स्पीड बनी है अभी आपकी? Ma'am, now I can solve trading P&L and balance sheet. ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन अपने हाथ से रिजॉल्व करोगे? छोटा सा है. ठीक है. ओके ओके. तो स्क्रीनशॉट ले लो आप. Yes, ma'am. Done. ये वाला हो गया. गुड. अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा. क्योंकि इन क्वेश्चन के बाद ना आप एग्जाम में जाने के लिए तैयार हो इस चीज के लिए. इसके बाद हम फंड फ्लो कैश फ्लो भी पढ़ेंगे आज. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. डन. Yes, ma'am, done. ठीक है, तो आई गिव यू 15 मिनट्स. ठीक है, 15 to Okay. 16 minutes for this question. वैसे जनरली हम लोग 20 मिनट देते हैं, बट यू हैव गॉट द स्पीड, सो आई विल डिडक्ट Okay. 17 मिनट्स में. आई वांट यू टू डू इट प्रॉपर. ठीक है, क्योंकि ये जो Okay. एडजस्टमेंट्स है ना, इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आती हैं. Okay, ma'am. ठीक है, so let's. मैम वो पहला वाला, the first one. अच्छा, ओके. जी मैम, स्टार्टिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है.
मैम नीचे कीजिए. क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है? The question only. You not taken the screenshot? Yes, ma'am, I took, but if I go there, what if I end from here? That's
Ma'am, here insurance prepaid for 3 months is given, but the amount is not given. Then how do I take out? I have to take out 1 month salary insurance ka thing. Insurance is prepaid for 3 months, right? Yes, ma'am. अब जो इंश्योरेंस है ना दैट इज 600, दैट इज एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये इन्होंने दिया हुआ है, ऊपर भी कुछ दिया है क्या इंश्योरेंस में? वन मोमेंट। वहाँ पे अमाउंट दिया था, लाइक वहाँ पे नॉर्मल 3 months नहीं दिया था, वहाँ पे अमाउंट दिया था, तो आई जस्ट सब्सट्रैक्टेड, बट 600 हियर नहीं 600 है पूरे साल का, राइट? यस। तो 600 पूरे साल का है, तो 6 मंथ्स का 300 हो गया, और 3 मंथ्स का 150 हो गया, है ना। तो जो आपका देखो यहाँ पे इंश्योरेंस दे रखा होगा, इंश्योरेंस का आपको देखो एसेट साइड पे 150 प्रीपेड में दिखा रखा जी। है ना। और इसकी एक और एडजस्टमेंट क्या होगी, जो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना हुआ है, हाँ देखो, प्रॉफिट लॉस में 600 इंश्योरेंस एक्सपेंस था टोटल, जिसमें से 3 मंथ्स का जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, प्रीपेड है। दैट मीन्स वो 150 उस साल के लिए नहीं है। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस में जो 600 आया था उसमें से भी 150 माइनस हो जाएगा। सो द एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 450, नॉट 600। गॉट माय पॉइंट? नो मैम। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, एडजस्टमेंट्स के हमेशा डबल इम्पैक्ट होता है, मालूम है आपको? यस मैम। तो डबल इम्पैक्ट होगा, इसका मतलब ये है दो अकाउंट्स में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो भी प्रॉफिट या एक्सपेंसेस दिखाते हैं वो उस साल से हुए हुए एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर 600 दिया हुआ है ना, उसको वो टोटल एक्सपेंस है जो हमने उस साल किया। लेकिन उस साल के अंदर जो मेरा 150 है, यानी कि 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है, उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है। तो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा पे रखा है। 3 मंथ्स कैसे निकालेंगे, यानी कि 12 मंथ्स मेरा 600 है, ठीक है। 600/12। 600/12 कितना आया? 50। 300। अरे बाबा, 50/50। 50 तो 50 इज फॉर 1 मंथ, करेक्ट। ओके। तो 3 मंथ्स का कितना हुआ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3, 150 1500 है ना। 50 नहीं बाबा, 50 50 150। 50 सॉरी 50 इंटू 3 150 ना। अभी भी जी नहीं मैम आया? जी। अब आ गया? आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा ठीक है। तो ये इंश्योरेंस मेरा 600 में से 150 माइनस होगा, और मेरे क्योंकि ये 150 मैंने पे कर दिया, बट दिस इज नॉट फॉर दिस ईयर, दिस इज दैट फॉर विल गो फॉर द एसेट। एसेट साइड। वेरी गुड, ठीक है। अभी कहाँ तक बना है? हाँ, आई जस्ट कैलकुलेट। ठीक है, करो।
Ma'am, I tallied the balance sheet. There's a little bit of difference in the thing. One, like for the asset side, I got 61920, and for the liability side, I got 65180. Ma'am, there's a little bit of difference in the balance sheet. Sorry, got on mute. Acha, Faria, what I'm saying is, whether these four items are there in your account. Can you hear me? Yes, ma'am. ठीक है. These four items are there, correct? Correct, no? Ji, ma'am, ji. ठीक है. Then wages, fuel, carriage, and gross profit. Is it the same? Ma'am, same. I got the answer also correct. 83100. Very good. So you have the gross profit 16970, correct? Yes. ठीक है. जी मैम. अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके ग्रॉस प्रॉफिट राइट साइड पे. नहीं, ये नहीं आया. क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट 16970 आया था ना आपका. हाँ, that one came. हाँ, Then तो ये after आपने this, ट्रांसफर किया. हाँ, ठीक है. कैरेज ऑन सेल्स लिया था. हाँ लिया था. सैलरी सैलरीज भी ओके. आउटस्टैंडिंग ऐड किया उसमें. इंश्योरेंस भी ऐड किया, लेस किया. यस, डिप्रिसिएशन भी किया. तो वन साइड इज दिस 24150. इज इट देयर? No, that one only did not. 24 one, that one did not. I did not buy net loss transfer to capital account. Because when you deduct this 16970 from 24150, then you'll get a net loss. Yes, ma'am, it's a loss. So it's 7180, which is correct. No, that one only I did not write over there. So you have to find this net loss and then you deduct this from the capital. Capital, yes. But आपका प्रॉफिट एंड लॉस टैली हो गया प्रॉपर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब करो बैलेंस शीट को.
Ma'am, is it 271320? Balance sheet total. No, no, no. अरे ये देखो कि कौन से लाइन आइटम्स मैच नहीं हो रहे, मतलब बस वन बाय वन ना लाइन आइटम टैली करो और उसमें देखो कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं मैच हो रहा, और जो नहीं मैच हो रहा वहां पे क्यों डिफरेंस आ रहा है वो देखो। जैसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके पास 10,000, Yes, ma'am. ऐसे ही आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल, नेट लॉस, ये सब दिया आपने। Yes, ma'am. What I have done is I've done in one row. I did not put this 80,000 inside the thing. So all my numbers are there, but it got uh, Then you must be mixed adding up. the net loss in your line item. Yes, yes, ma'am. That's why it became so much. So that is the one, right? See, what we are doing is here, we are trying to see the impact of net loss or net profit on capital. So you have to have a net capital amount outside now. So at 80,000 should be inside, and you have to deduct deduct this loss 10,000 7,180 from there. Or if you want, then you have to put it in minus sign, so that it will be clear that this amount is in minus sign. It should be deducted. Yes, ma'am. I have to do it neatly. हाँ ठीक है, तो other asset side is matching 86320. Ma'am, it's matching. अच्छा, now the total is matched, correct? Yes, ma'am. ठीक है, good. So now you are ready with the question, you are ready with the adjustments, you are ready with the line items, you are ready with the difference also. ठीक है, क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग. ओके, शैल वी मूव अहेड? Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर और लेस सेम, बट फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है कि आपके इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह भी बनते हैं और चेक होते हैं, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ written record of the position and the financial activity of business, that how your business is doing, what is the financial position, what are the different aspects of assets, liability in your account, where do you stand in terms of net profit, net loss, gross profit, gross loss, and also in comparison to liability and balance sheet, what is the stand, right? So what are the important contents that you will see in a financial statement? You will see a collection of standard reports. For example, balance sheet, you will see income statement, you will see cash flows, you will see statement of retained earnings. So इसमें क्या होता है कि आपको आपके टोटली ये सब इन इम्पोर्टेंट अकाउंट से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में मेरे बिजनेस की फाइनेंशियली क्या स्टैंड पॉइंट है,
ठीक है, what is the actual financial picture of my organization, and basis that मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान करें, क्या नहीं करें, क्या फोकसिंग होनी चाहिए, क्या हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, क्या हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, या हमारे फंड्स को हमें कहीं री इन्वेस्ट करना है, या हमें कोई नया यूनिट प्रोड्यूस करना है। ये सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होती है। एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ओनली वर्किंग एज अ गाइड फॉर your internal stakeholders, but also it is a position to show to the external stakeholders also, like your customers, your prospective investors, your prospective creditors, those who may give money to you at the time of need. But for that your picture has to be clear and strong to them. It has to be very very clear about what exactly going on in your business in terms of financial position. ठीक है, क्लियर है भाई, हम कहाँ स्टैंड करते हैं आने वाले समय में, अगर हमें फ्यूचर में कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट उठानी हो, या कहीं से हमें कोई मतलब हमें कोई कुछ फाइनेंसिंग करानी हो, तो हमारे पास जब हमारी एक रिपोर्ट तैयार रहती है, हमारी फाइनेंशियल पिक्चर तैयार रहती है, तो आगे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाहर के हमारे आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं जो दे सकते हैं पैसा, प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, फ्यूचर क्रेडिटर्स, वो हमें पैसा भी दे देंगे, है ना, क्योंकि उनको पता रहेगा कि भैया पोजीशन ठीक है कंपनी की। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, now can you read this for me? Why do I need to produce a financial statement? Why do I need to produce a financial statement? At first glance, we know that producing and reading financial statements might seem like an extremely overwhelming amount of information, and you are absolutely right. But there's no need to be afraid of them, because once you manage to get on top of your business practice and records, you will be able to save time and cost for both you and your business. Whether you are a small business running from home, a sole trader, freelancer, or pretty much anything else, financial statements will help you easily interpret and process your accounting activity. Correct. So financial position में बोलते हैं कि since you need to produce and record your financial statements, your transactions, a lot of information about your business, but that is not an area of worry. Rather, that is an area of strength, because you are easily able to interpret or summarize the actual position of your business, or a particular transaction, or a particular activity, or a particular department. So you will be able to handle such decisions from your financial statements. Okay. Okay. Next. So what is the purpose of financial statement? Yes, Faria. Financial statements have a number of uses, both internally and externally. For external stakeholders, such as investors and creditors, a business's financial statements is expected. These statements allow users to gain insight about the current financial position, growth, resources, and cash flow prospects of the company. Furthermore, investors. So what financial statement? I mean, what's the purpose of financial statement? So it is definitely useful for both internal as well as external stakeholders. As external stakeholders, as I mentioned already, your investors, your creditors, your future financiers, right? Those who can finance in your business, or those who can invest money in your business. So obviously, these statements will give a insight about what exactly going on in your business, what are the growth prospects, how you're using the resources, what are the cash flow prospects of the company, whether this company is good to invest or not, whether this company will make good returns or not. You can see from the past pictures also. You can do the comparison, you can do the trend analysis, you can see couple of years financial position simultaneously to see how the business is doing. ओके, तो जो आपके बाहर के लोग हैं, वो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से सैटिस्फाई है, तो वो कल को हो सकता है आज उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया आपकी कंपनी में, पर वो फ्यूचर में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको फाइनेंसिंग बहुत आसानी से हो जाती है, आपकी कंपनी की गुडविल डेवलप होती है ना, और आपको आसानी से ग्रो करने का मौका मिलता है. नेक्स्ट. Furthermore, investors may use financial statements to help when making economic decisions by better understanding a business's progress and opportunities for growth. Okay. So investors आपकी financial positions को use कर सकते हैं किसके लिए?
कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए कि भाई आपकी कंपनी क्या कर रही है, कैसा चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ग्रोथ क्या है, वो सारी चीजों के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स को हेल्प करते हैं. नेक्स्ट. Financial statements are also vital for internal purposes as a measurement tool for the performance and change of the business. These reports are also considered when making important financial and or managerial decisions, as they give a very clear and accurate visual representation of your business's current financial situation. वेरी गुड. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप और बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि आपके क्या क्या मतलब परफॉर्मेंस एरियाज हैं जो अच्छे हैं, फिर कौन से एरियाज में वीकनेस दिख रही है जहाँ पे आगे कुछ चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको फिर हम ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं. क्योंकि बेसिकली इससे हमें एक विजुअल प्रेजेंटेशन मिल जाता है कि भाई देखो ये चीजें हमारी गिर रही हैं, ये चीजें हमारी बढ़ रही हैं, और इस चीज में हम लोग लैग कर रहे हैं, इस चीज में हम लोग को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरे यूनिट में डालना चाहिए. So all these things can be, a gauge can be decided basis the financial statements or records that you can see from this particular analysis. ठीक है? जी मैम. Correct? Any question, Maria? No ma'am, no ma'am. ठीक है. तो अब जो हम लोगों ने स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आता है पहला इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस सब आएंगे. देन वी हैव बैलेंस शीट which we have already studied. Then we have statement changes in equity and cash flow, and finally last is your notes to financial statements. So these are the 5 important documents that you may study under financial statement analysis. ठीक है? तो so before we get into this, I want you to read it on your own first. ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये तुम एक्सप्लेन करोगी मुझे फरिया पहले. ठीक है? तो give you 3 minutes to read it on your own and then you will explain this to me. ठीक है? Okay फरिया? Yes, no? जी मैम, जी, yes मैम. Okay. And this is one of the most important topic for the exam. Yes ma'am. What do you understood? Ma'am, the same thing as you explained, that is, income statement gives the 3 main financial information to the and to everybody. That is how much revenue, how much expense, how much profit, and how much loss for a specific period of time. And in conclusion, if a user wants to know what is the condition or what is the status for that organization or entity, then the person can refer to the income statement and see to the profit and loss,
expenses incurred and the revenues of that thing. And there are two different formats for that. One is IFRS based on the decision. So there are two different formats. First one is That is single format. first one is where, yes, single one and the multi statement. सिंगल में क्या होता है? Single, there both income statements and other comprehensive statements are present in one statement. In one statement it's given. And for the multi statement, they are present in two different formats. Correct. So in conclusion, if users want to see that what is the actual sales or what are the expenses or income or what are the revenues generated. So what is the profit and loss? All these things can be easily checked from Income statement. Now in the income statement also, you will have three main information. One is revenue, other one is expenses, and last is your profit and loss, right? तो expenses में क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हैं जो कि हमारे बिजनेस में हुआ है. व्हाट इज ऑपरेशनल कॉस्ट? Working capital, day to day cost. Day to day. What is the day to day expense that has impacted the operations or impacted the operational cost? So okay, so go through this also, Faria. Then we'll discuss till profit and loss. I want you to read till profit and loss. Just read it on your own and then we'll discuss. Okay, ma'am. If you could scroll upwards. Achha. Further? Then profit and loss balance sheet done. क्या बस ये ऊपर ऊपर का समझ में आ गया पहले? No, ma'am, I'll read. You first read this. You first read this, then move to profit and loss, and then balance sheet. Balance sheet or profit and loss, so you already calculated also.
Yes, ma'am. So what you started from revenues? क्या आया समझ में? Yes, ma'am. They Yes. this is talking about the operating expenses. What are the operating expenses? They are the salary expenses, the depreciation, the traveling expenses, and the COGS and administrate. And yet they report where in the calculation they report in the administrative expenses. Correct. That's So what they do here is कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपकी सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, आपकी कोई ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई आपने टैक्स पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ये सारी चीजें जो हैं इसको इंक्लूड कर लेते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ रेंडिंग सर्विसेज में, जिससे कि ये पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर ईयर में कितनी कॉस्ट हमारी इनकम हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, है ना, जो जिससे कि हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी अकाउंटिंग एंट्री हम इसमें कर देते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ। मतलब 2 साल में अगर पिछली बार मेरा 1000 का एक्सपेंस था सैलरी का फॉर एग्जाम्पल, और इस बार अगर 1200 है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? percent. हाँ, परसेंट 20%. 20%, है ना। तो अब अगर आप देखो, अगर आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करो, है ना, 1 साल के, 2 साल के, और आप सिंपली डिफरेंस देख लो, 20% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, 5% इंक्रीज, ये ज्यादा इजी आउट हो जाता है ना। व्हेन यू आर डूइंग अ Yes, ma'am. कंपैरिजन आल्सो आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि भैया मैं अभी ग्रोइंग फैक्टर में हूँ या ग्रोइंग रो पे हूँ, या फिर मैं आई एम लूजिंग, राइट। So that also can be analyzed from this particular statement. So expenses are recording in a different direction from revenues in terms of accounting entry, and they are increasing in debit or increasing credit. That will also be seen from this particular account. Now from profit and loss, what do you see? If there is revenue is increasing and expense is decreasing, then it will be a profit, and if vice versa, then a loss. Correct. So that will also help you to understand whether you want to retain this profit in the balance sheet, or you want to make some changes in equity, or if there is a change in an equity, that will also be shown statement of equity. भाई equity क्या होता है? जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी के कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से दिखाते हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप दिखाओगे। ठीक है, देन वी हैव बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में क्या आएगा आपके? Assets and liabilities. Assets or liabilities. Very good. Just go through this, then we'll discuss. Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या क्या मिला बैलेंस शीट में? So in balance sheet, we see the financial condition and position of the of the organization, and under which it comes assets and liabilities. For assets, there are two kinds of assets: current assets and non-current assets. Current assets refers to petty cash, cash in hand, bank balance, and for non-current assets, we have that is having like, for example, plant and machinery, and
furniture that gives a lot of value. Fixed kind of assets, है ना? Yes, fixed assets. ओके, वेरी गुड. सो बैलेंस शीट बेसिकली जिसको हम लोग एक बार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, इसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी ये तीनों चीज दिखाते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में. इक्विटी आल्सो कम्स अंडर लायबिलिटीज. ठीक है. बैलेंस शीट में हम लोग जिसको फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि भैया कंपनी की अब नेट वर्थ कितनी है. आपको बैलेंस शीट के नीचे टोटल अमाउंट से पता चल जाता है ना. जी मैम. जब आप निकालते हो ना टोटल, तो वो आपको बता देता है भैया इतनी नेट वर्थ है. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट से डिफरेंट होती है रिपोर्टिंग डेट में, और इसमें हम लोग क्या मतलब टोटल आपका जो इम्पैक्ट है इन स्टेटमेंट्स का, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का, वो शो करते हैं. देन आपके कैपिटल को शो करते हैं, आपके क्रेडिटर्स को शो करते हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, वो आप अपनी बैलेंस शीट से निकाल सकते हो. बैलेंस शीट के अंदर भी आपका जो एसेट्स वाला पार्ट है वो दिखाता है कि भाई कितना कंपनी रिसोर्सेज को ओन करती है लीगली और इकोनॉमिकली. मींस वह कितनी बिल्डिंग है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी लैंड है, कितना फर्नीचर है, कितना कैश है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं. एज यू करेक्टली सेड, एसेट्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, आपकी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स मीन फिक्स एसेट्स, और करंट एसेट्स जो एक साल तक चलती है, एक साल के कैश है, कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. शॉर्ट टर्म एसेट्स को बोलते हैं, जैसे आपका कैश इन हैंड, पेटी कैश, रॉ मटेरियल. पेटी कैश के बाद आपका वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रीपेमेंट्स, ये सब आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स कहलाती हैं, यानी कि नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं. ठीक है. नॉन करंट एसेट्स जो कि आपके फिक्स कैपिटल है, सॉरी फिक्स एसेट्स हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें आपकी फिक्स एसेट्स में आ जाती हैं. ओके. देन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, वो सब भी हमारे इसी में रिकॉर्ड होती है. ठीक है. उसके बाद भी इसमें भी हम लोग डेबिट क्रेडिट का जो इंक्रीज है वो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हम इस साल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पिछले साल कहाँ स्टैंड कर रहे थे, उससे पिछले साल कहाँ हम ट्रेंड भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. देन ओनली विल बी एबल टू सी ना वेदर वी आर ग्रोइंग और नॉट, है ना. जब आप ट्रेंड देखते हो अपने, अब जैसे आप हो, व्हेन यू कंपेयर योर ओन मार्क्स, देखते हो ना कि मैं पिछले साल मेरे 94 आया था, इस साल मेरे 91 आया, तो मेरे 3% डाउन है. हालांकि लोग कहेंगे यार तुम तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन जब मैं अपना खुद का एनालिसिस करती हूँ, देन वी आर एबल टू सी कि भाई मैं पिछले साल से इस साल मेरा रिकॉर्ड नीचे गया है. ठीक है. क्लियर है? यस मैम. बढ़िया. क्लियर है ना. यस मैम. यस. एज मतलब जैसे एक्सपेंसेस में हम लोग एसेट्स वाला पार्ट, सॉरी एसेट्स में हम लोग अपने रिसोर्सेज वाला पार्ट देखते हैं. इसके अंदर हम अपने ऑब्लिगेशंस देखते हैं, अपनी लायबिलिटीज देखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या हमें पे करना है. जैसे हमने कुछ क्रेडिट पे मान लिया है, कोई लोन ले रखे हैं, किसी तरह का इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है, या कोई हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, ये सारे वो सेक्शन है जहाँ पे हमें पेमेंट्स करनी होती है आगे. ठीक है. करंट लायबिलिटी एज आई मेंशन, जैसे करंट एसेट्स जो है वो एक साल के अंदर अंदर ड्यू हमें मिल जाता है, या कैश में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है, कैश के फॉर्म में होता है. ऐसी करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर हमारी ड्यू हो जाती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जिसमें हमें एक साल के अंदर अपने डेट्स को पे करना होता है. ठीक है. नॉन करंट में थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले हो गए, जैसे कि हमारा लोन हो गया, या लॉन्ग टर्म ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए, है ना, जो 12 महीने से ज्यादा वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं. उसके बाद आ जाता है इक्विटी. इक्विटी भी बेसिकली हमारे लायबिलिटीज में ही आती है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी का जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, वो इक्विटी कहलाता है. कि भाई तुम्हारे पास अपना कितने एसेट्स थे, उसमें से कितनी लायबिलिटी पे कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स मेरे पास 10,000 है, लायबिलिटीज इक्विटी को छोड़ के मेरे पास है 8,000. इसका मतलब इक्विटी कितनी हो गई बढ़िया? 10,000 के एसेट. यस मैम. और 2000 की मेरी इक्विटी हो गई, है ना. तो इतना जो है ये हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे इसको. उसके बाद देखते हैं कि जो नेट इनकम है, नेट लॉस है, उसको इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हैं बाय एडिंग इट टू रिटेन अर्निंग्स, या प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर जो भी हमारा आया होगा, उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. मैंने बताया था
कि अगर हम इक्विटी में चेंज कर रहे हैं, जैसे रिलीज कर रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं या फिर री इन्वेस्ट करा रहे हैं, जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो मेरे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम फिर अपने बैलेंस शीट में एडजस्ट करके फिर दिखाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? The flow in cash. हाँ, मीन्स कितना पैसा इस साल मूव हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेट, आई मीन इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच शोज व्हाट आर द डिफरेंट कैश ट्रांजैक्शंस व्हिच हैज मूव्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तीन सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है ऑपरेटिंग, होता है आपका इन्वेस्टिंग और एक होता है आपका फाइनेंसिंग। ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या दिखाएगा कि कैश कितना ऊपर नीचे हुआ है, मतलब कितना फ्लो हुआ है कैश का। फिर उसके बाद आता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस की तरफ से, जिसमें एंटिटी को जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो सब डिस्क्लोज करनी होती है। मींस कोई बैलेंस शीट में चेंज आया है या बैलेंस शीट है फिक्स एसेट्स है, कुछ भी आपने चेंज किया है, आपने कोई डेप्रिसिएशन वैल्यू चेंज की है, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया, कुछ भी, that you have to explain in this noted to financial statements, ठीक है। Yes, ma'am. ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, अभी कवर हो गया? जी मैम. ठीक है, गुड। ये एग्जाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक ना डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करवानी थी मुझे, मैं अब सोचू इसको कराऊंगी थोड़ा सा, जब और दूसरा क्राउड आएगा साथ में करेंगे उसको, है ना। अच्छा, अब हमें करना Journal. है, सॉरी, Debit credit entry means journal. हाँ जर्नल, करेक्ट। Okay. ये टॉपिक है, ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये हम आज को कवर कर लेते हैं। ये अगर कोई थ्योरी बाद में पढ़ेगा भी तो उसको समझ में आ जाएगा। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके डिसीजंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब फटाफट से आज इस सारे सेशन में बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे कैश फ्लो, वो प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, तो उसमें हमें और को भी आने दो। अच्छा, व्हाट इज फाइनेंशियल, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, पर यार ध्यान रखना है इस चीज के लिए, ठीक है, एग्जाम में आता है इसका। Okay. ओके, देखो मेरी कोशिश यही है कि हम मोटा मोटा पहले इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जल्दी कर लें, ताकि जब हम फिर रिवीजन करें या कुछ करें तो हमें और भी एक रिवाइज होगा, हम एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे, हमें टफ नहीं लगेगा एग्जाम में, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कैन यू रीड दिस? Yes, ma'am. Financial management refers to the effective planning, organizing, and controlling of monetary resources. Financial management primarily includes decisions and considerations regarding the size of investments, sources, and range of use for capital, and the extent of profit earned from the same. It generally involves applying different management techniques to an enterprise's financial resources to maximize profit. So basically financial management क्या होता है? Financial management, as whenever we talk about management, we talk about planning, organizing, controlling. तो जब फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में आ जाएगा, तो फाइनेंसेस को कंट्रोल करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और उसके रिसोर्सेज को मॉनिटरी कंट्रोल करना। सो ये दीज ऑल थिंग्स विल कम अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो फोकस करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर, जैसे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन कौन से सोर्सेज से पैसा आएगा, फिर हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, किस लेवल का हमें अर्न करना है, मतलब क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, और हम फर्दर फिर आगे मतलब उसको एज अ डिविडेंड बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, ये सब कैसे करेंगे, ये सब मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्कोप में आती है। पढ़ो एक बार करिएगा। Scope of financial management. Financial management helps a particular organization to utilize their finances most profitably. This is achieved via the three conducts. Investment decision. Investment decision depicts investing in a fixed asset. It is also referred to as
capital budgeting. Investment decision can be of either long-term or short-term basis. Long-term investment decisions allow committing funds towards resources like fixed assets. Long-term investment decisions determine the performance of a business and its ability to achieve financial goals over time. Short-term investment decisions or working capital financing decisions mean committing funds towards resources like current assets. It occupies funds for a shorter period, including investments in inventory, liquid cash, etc. Short-term investment decisions directly affect the liquidity and the performance of an organization. ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें पैसा कहाँ लगाना है। मींस हम जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे ना, जिसमें आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपीवी जिसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट वैल्यू, आईआरआर बोलते हैं। आगे मतलब वो बताऊंगी मैं आपको, जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हम उसकी टेक्निकलिटीज पढ़ेंगे, है ना। उस तरह के जो डिसीजंस हैं कि हमें कौन से बिजनेस में लगाना है, शॉर्ट टर्म में कहाँ लगाना है, लॉन्ग टर्म में कहाँ लगाना है, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, फिर कौन से पैसे को कितने टाइम के लिए रखना है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, ये सारे डिसीजंस मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन। Financing decision. This scope of financial management indicates the possible sources of raising finances from various resources. They are of two different types. Financial planning decisions attempts to estimate the sources and possible application of accumulated funds. A proper financial planning decision is crucial to ensure the availability of funds whenever required. Capital structure decisions involve identifying various sources of funds. It facilitates the selection of the best external sources for short or long-term financial requirements. वेरी गुड। सो फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या आता है? फाइनेंशियल डिसीजंस इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, मीन पैसे को कहाँ से रेस करेंगे, कैपिटल को कहाँ से रेस करेंगे, क्या हम लोन लेंगे, क्या हम इक्विटी वालों के पास जाएंगे, क्या अपना ही प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये एनालाइज होते हैं, डिसाइडेड होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस में। सो बेसिकली ये देखते हैं हम कि हमारा सोर्सेज और एप्लीकेशंस क्या रहेगा, मतलब हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ लगेगा। ये सारे जितने भी डिसीजंस हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में आ जाते हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाते हैं। और इसमें जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, जैसे कि हमें कहाँ से पैसा लेना है, मींस हमारा लोन का पार्ट कितना होगा, हमारा इक्विटी का पार्ट कितना होगा, हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का कितना होगा, हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स का कितना होगा। ये सारा जितना फाइनेंशियल डिसीजन है वो मेरा फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या मेरा जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां से पैसा फाइनेंस करवाएंगे, है ना, वो मेरा डिसीजन होता है। Then the third one is dividend decision. Dividend decision. It involves decisions taken with regards to net profit distribution. It is divided into two categories: dividend for the shareholders and retained profits. Usually depends on a particular company's expansion and diversification plans. Correct. So dividend decision basically क्या बोलते हैं कि ये कितना जो मेरा प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें से कितना मैं डिविडेंड दे दूं शेयर होल्डर्स को, और कितना मैं ना दूं। जो ना दूं वो तो हम अपना बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं ना, उसको वापस लगा रहे हैं। अब एक बात, मैं आपके यहाँ पे स्टेक होल्डर हूँ, मेरे शेयर्स हैं आपकी कंपनी में, और उस कंपनी में जो प्रॉफिट मेरे शेयर्स पे अर्न हुआ है आप उसको अपने बिजनेस में पैसा वापस लगा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। मैं अलाउ कर दूंगी या नहीं कर दूंगी? और अगर कर दूंगी तो क्यों, नहीं कर दूंगी तो भी क्यों, सोच के बताना। So you will allow to invest because the profit which you're earning, that is also going in the investing, and then next you'll earn more profit with the investing amount. With your previous year's profit, you will be again earning more with it. More profit, more dividend, correct. Now Yes, my ma'am. question is, why do I invest in your company? Why I mean I can take out my money from your business and I can reinvest in markets. मैं आपकी कंपनी में क्यों अपना डिविडेंड डालूं? मैं मार्केट में भी तो वापस डाल सकती हूँ ना। Ma'am, you saw my balance sheet.
So you saw the financial position and the amount of earnings the company makes. It is more than the market. So वाओ you will नाइस. invest it. सो यस, सो यू मीन टू से अगर हमारी कंपनी मार्केट से ज्यादा कमा रही है तो मेरे शेयर होल्डर्स बोलेंगे ठीक है आप डाल लो अपनी कंपनी में पैसा वापस. और अगर वो नहीं कमा रही है, मतलब मेरी कंपनी कम कमा रही है, तो ऑब्वियसली मेरे स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे मेरी कंपनी में री इन्वेस्ट करने में, right? So again, for your dividend decision, you have to have a comparison between markets and your own earning capacity. If your if your company's earning capacity is high, obviously your stakeholders would be investing or interested in reinvesting the dividends. Otherwise, they would not be. No. ठीक है? Yes. Clear हुआ ना? जी मैम. वेरी गुड. अब हम पढ़ते हैं, ये खुद सेल्फ रीड वाले हैं क्योंकि ये सब मोरलेस वही चीज है. तो आई गिव यू 5 मिनट्स, इसमें इसको ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और लिमिटेशंस यहाँ तक पढ़ना है. आई गिव यू 10 मिनट्स रादर. बट ये इसको इस तरह से पढ़ना है परिया कि एग्जाम में लिख लो, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनता है. Yes मैम. ठीक है, एक बार इसको थरो रीडिंग करनी है, बिल्कुल थरो सेल्फ रीडिंग. Ma'am, if you could scroll down. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है. करो स्क्रॉल डाउन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, surplus means the net profits. Correct. After meeting the expenses, what additional you are left with, that is the surplus. Surplus. Okay, ma'am. Done, ma'am. Done. One moment, ना. One moment. इतने ना change कर दिया. Wait, wait.
समझ में आया? यस मैम। मैं एक बार और आपको जस्ट बता देती हूँ। सी वॉट एवर वी हैव स्टडीड मोर और लेस इनमें भी यही मिलेगा आपको, ठीक है, बट इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जब एग्जाम में देखते हैं ना, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखे, इसमें क्या लिखे। सिंस यू हैव द आइडिया अबाउट दिस, so you are able to understand, but this is for my other students also. You know, I have added these notes so that they can go through and they can study, ठीक है ना? ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने बता दिया था, फाइनेंशियल डिसीजन हमने बता दिया, डिविडेंड्स हमने बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कितना हमें फंड्स मिल रहे हैं, कितने मेरे सरप्लस हैं, मेरे फंड्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है, हमारे डेट और इक्विटी के बीच में बैलेंस है या नहीं है, और कितना हमें एडिक्वेट रिटर्न्स मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उनको स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उसके लिए हम लोग क्या इंश्योर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पर सेट कर लेते हैं। फिर इसके बात करते हैं फीचर्स में। फीचर्स में सबसे पहले मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी कि हमें एक जो बेसिक फंडा था जिसके ऊपर ये लोग एनकरेजमेंट रखते थे कि भाई जितने भी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरह कंसिडर करा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि फंडिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स, जैसे कि लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन मीन्स कि लिक्विडेट हो गया, हमें और पैसा चाहिए, या हमें कोई रीऑर्गेनाइज करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। वो कहते थे कि इसीलिए हमें चाहिए होती थी, जिसमें हम लोग वो तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि मेरे क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहेंगे, कहाँ से मेरा फंड्स कलेक्ट होगा, और लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप कैसे रहेगी। ये मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को ये नैरो अप्रोच थी, इसको नैरो अप्रोच बोला जाता था इसमें, क्योंकि एक तो वन साइड अप्रोच देखते थे। वो कहते थे कि हमें तभी पैसा चाहिए होगा जब हमारी इस तरह के बड़े इश्यूज अराइज होंगे, बट ऐसा नहीं है। पैसे को डेली टू डेली डे टू डे मैनेजमेंट में हमें मैनेज करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं था। फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज पे ध्यान था कि भाई हमें एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो उस बड़ी कंपनी में क्या क्या चीजें ध्यान है। पर जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गई या सोल प्रोप्राइटर, वो उस चीज के ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया था कि क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड फंड्स के टाइम पे फंड अरेंज करने के ऊपर सोचते थे, लेकिन ये डे टू डे मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल के बारे में ये लोग नहीं सोचते थे। उसके बाद मेरी ना एक मॉडर्न अप्रोच आई। मॉडर्न अप्रोच ने क्या बोला कि थोड़ा ओपन प्रोस्पेक्ट रखा गया, और उसमें ये देखा गया कि हमें कैसे कैसे हमारे पास पैसा आएगा, और उसके साथ साथ कैसे कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मतलब हम इसमें बहुत एप्लीकेशंस पर भी और सोर्सेस पर भी, दोनों पे ही ध्यान देने लगे, क्योंकि जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मेरी अप्रोच थी कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, मेरे बजटिंग क्या होगी, कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेज करेंगे, क्या प्रोविजंस बनाएंगे, कैसे कैसे मेरा पैसा धीरे धीरे आएगा, कहाँ कहाँ लगाऊंगी, ये सारी चीजें हमने मॉडर्न अप्रोच में एक्सप्लोर करी, ठीक है। दैट इज वाई जो हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो थोड़ा नैरो मानी गई, और फर्दर फिर मॉडर्न अप्रोच में हमने ये सारे पॉइंट्स को देखा। उसके बाद कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली भाई नॉर्मल रहे, पैसा सप्लाई आता रहे, फंड्स आते रहे, उसके बाद उसका उसमें फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, बेटर आउटपुट मिले हमें वहां से, सेफ वेंचर्स में हम लोग पैसा लगाएं, रिस्क कम हो, है ना। कॉम्पोजिशन का जो कैपिटल का जो कॉम्पोजिशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसमें जो डेट है और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है वो भी प्रॉपर हो, ठीक है। ये मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस में ऑब्वियसली मोरलेस जो आपके डिसीजंस हैं वो सब आएंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कितनी एस्टिमेट होगी, कहाँ से लाएंगे, किस किस तरह से पैसा फाइनेंस होगा, कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, अगर हमारे सरप्लस है तो उसको हम क्या करेंगे, कि हम उसको डिविडेंड के फॉर्म में लगाएंगे, क्या हम उसको रिटेन करेंगे, क्या हम इसे एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैश कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कहाँ से होगी, ये सारी चीजें हमें आपके फंक्शंस में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो मोर और लेस ना ये वाला जो हम लोगों ने यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ना, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स
और ये जो अप्रोचेस, इसमें से ना एक आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? Yes, ma'am. The first question only is the theory question. करेक्ट है ना? तो 8-10 नंबर 15 नंबर हम इनमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में मोर और लेस यहाँ से आपको क्वेश्चंस अराउंड फॉर 10 मार्क्स यू विल गेट। ठीक है, क्लियर? अभी इस बार क्या Yes, प्लान ma'am. है, एमसीक्यूज का है या फिर वैसा आने का, क्या बोल रहे No, हैं? ma'am. Everything is normally like whole. Everything written अच्छा, normally. अब आपका वैसा हो गया सब्जेक्टिव। Yes, ठीक ma'am. है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Ma'am, is it possible for you to email me this thing, Yes, this preparation? of course, I will do it just now only. Okay, ma'am. Thank you so much. What I'll do is, actually मैंने इसलिए भी नहीं भेजी थी ना, इसको थोड़ा सा मुझे वो करना है था, थोड़ा सा बीच में से कुछ डिलीट करना था, एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर, तो आई वांटेड टू डिलीट दैट, बट कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट ये वाला भेज देती हूँ, है ना? एक मिनट, मैं पहले अपनी पर्सनल पे भेज दूँ। I will send it from my Gmail account. Okay? ये इसमें इस फाइल का नाम भी मुझे, ये फाइल का नाम भी चेंज होगा, दिस इज नॉट MHA, इट्स BHA, करेक्ट? Yes, ma'am. BHA. Yes. मैं इसको आई विल जस्ट सेंड यू नाउ, ठीक है? इसको अभी अपने पास पढ़ लेना, इसको एक बार सीमा को भेज देना, जिसमें से नाम चेंज कर देना, BHA कर देना, वो ग्रुप में डाल देगी। Okay, ma'am. Okay, कर दोगे ma'am. ना आप इतना काम? ठीक है, Okay, ma'am. Okay.